So it means that whenever a foundation is constructed, whenever a foundation is designed, तो वो foundation Siddharth, कैसा रहना, so it should, I mean, bear the shear as well as, I mean, avoid the settlement. It should bear the, I mean, shear and avoid the settlement. तो shear failure होने नहीं देना और excessive settlement नहीं होने देना, ये है हमारे foundation का main work, the main work. So what is the purpose of the foundation? The purpose of the foundation, this has been actually a very simple thing, but asked in MTech also, I think 2 years back. So what is the purpose of the foundation? The purpose of the foundation, or a work of the foundation, the first is to distribute the weight of the structure over larger area so as to avoid overloading of the soil beneath. It means that suppose there will be superstructure, so you cannot pass that superstructure onto particular, उसका जितना wall है उतने पे ही आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उतना अगर से हम करेंगे सॉइल पे तो लोड ज्यादा हो जाता. So what we do, we construct a footing to a larger area so that the load can be distributed to the larger area. तो पहला काम क्या है हमारा, वेट ऑफ द स्ट्रक्चर जो भी है उसको लार्जर एरिया पे ट्रांसफर करना है, जिससे कि ओवरलोडिंग ना हो, जिससे कि ओवरलोडिंग ना हो. दिस इज आवर फर्स्ट पर्पस ऑफ फाउंडेशन, though it may look very easy, but it has been asked. Second is to load the substratum evenly and thus prevent unequal settlement. It means that whenever the load is applied, suppose करो नीचे नरम, कोई भी आप एक नरम चीज ले लो और ऊपर से एक लोड डालो तो वो धस जाएगा, it will settle down. So our building should have a permissible settlement, beyond that हम उसको settle होने नहीं देना है. So now that whatever the avoid the unequal settlement in the sense, कभी एक तरफ settlement ज्यादा होता, एक तरफ settlement कम होता, तो this is very dangerous. This is called differential settlement. We have to avoid such type of settlements. Of course, आप कितना भी solid करो, थोड़ा ना थोड़ा settlement होने वाला है ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सॉइल, देयर इज कोड में क्या है, एक पर्टिकुलर सेटलमेंट दिए सो है. मींस फॉर पंढरपुर के सॉइल के लिए 2 mm सेटलमेंट इज इनफ, पंढरपुर के सॉइल के लिए 2 mm ऑफ सेटलमेंट इज इनफ. सो एट दैट टाइम आपको इतना ही, मतलब आपका सेटलमेंट 3 mm क्रॉस 2 mm क्रॉस नहीं करना है, 3 mm नहीं होने देना है. ये है फाउंडेशन का दूसरा काम. And third is to provide a level surface for building operations. Of course, the surface should be level one, not at the differential level. That is the third one. And to increase the stability of the structure by taking deep into the ground. Deep in the sense soil where it is firm, वहां तक आपको structure को लेकर जाना है, so that the foundation can be stable. The foundation can be stable. So you should know, this is a very simple question, but can be asked in any interview levels or as a basic level. What is foundation? You should know. Okay, and what is the purpose of the foundation? Why we are going to provide the foundation? You should know it. And choice of the foundation, as I told you, foundations are of two types. One is deep foundation, another is shallow foundation. So as far as possible, please go for shallow foundation only. As far as possible, please go for shallow foundation only, because it is economical. You cannot go for each and every Tom and Jerry buildings. For each and every Tom and Jerry buildings, you cannot go for deep foundation. It will be totally uneconomical. So first of all, you go for shallow foundation. And suppose your load is more or the soil is weak, it cannot going to resist, then you go for ground improvement techniques. आपको ऐसे कुछ टेक्निक्स है, ऑफ कोर्स दैट इज आई मीन बिगर टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक्स. कभी हम सॉइल में लाइम मिलाते, कभी सॉइल नेल्स यूज करते, तो यूजिंग दैट ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक ट्राई टू इम्प्रोवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स. मतलब सॉइल को अच्छा बनाओ, सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाओ. अगर से ऐसा करने के बाद अगर से आपका सॉइल सफिशिएंट है,
to take the load of the superstructure, it is okay. Again, you can go for shallow foundation. But even after ground improvement technique also, it is not possible that to support the superstructure, then you have to go for deep foundation. And believe me, deep foundation is very uneconomical. This is the last option you are having. Of course, your building is, 10 story, 12 story, 15 story, bada mall hai. So then there is no way. You have to go for that type of foundation only. But the thing is, if it is within the limits, then definitely you have to go for shallow foundation only. So the first choice is, after knowing the purpose of the foundation, the first choice is shallow foundation. If the building is having whatever the gross pressure intensity, जो भी load है building का, अगर से वो sufficient है, bearing capacity ज़्यादा है, it can withstand the load, so you go for shallow foundation. But there is some problem is there. So you are getting some problem in the soil. Then you make you use any convenient ground improvement techniques. You add that ground improvement technique to the soil. And after making ground improvement technique, again, if properties of soil has been increased and it is going to resist the superstructure, it is okay, then you can carry on. But even after ground improvement technique also, it is not possible, that shallow foundation is not at all enough, then only you go for deep foundations. And deep foundation, different types of deep foundations are there, but for your syllabus in detail is there, and it is the pile foundation. We'll go for it whenever we take that one. Okay, so so now the choice of the foundation depends on soil profile. Of course, it is the main thing. What type of soil is there? Suppose if it is hard soil, 100% you will go for shallow foundation only. And if it is suppose black cotton soil or weak soil, and if you go for shallow foundation, then it will be difficult. So choice of foundation depends on soil profile, and then what is its bearing capacity. Then third, what is the type of the structure? It is multi-story, single story, और it is highway, और live load कितने हैं? चलो आप बिल्डिंग बना रहे तो ठीक है, एक बार स्टैटिक लोड आ जाता, लेकिन आप एक पुणे बॉम्बे हाईवे के ऊपर एक आपका ब्रिज है, कंटिन्यूअस आपका ट्रैफिक है, एक के बाद एक गाड़ियां जा रहे, so there it is very difficult. So for that type of roads, again, you have to go for some different type of foundation. So again, it depends on type of structure. What are the types of loads it are coming? Suppose it is prone to seismic load, means again a different type of foundation is needed. So what are the differential settlements for that particular soil? So what are the environmental and considerations? And the most important thing is economy. आपके पास पैसे नहीं है, आप बोलेंगे 2 मंजिल की बिल्डिंग के लिए पाइल फाउंडेशन डालो, चलो आपके पास पैसा है तो ठीक है, आप पाइल फाउंडेशन को जाओ, आपको ज्यादा इकोनॉमिकल का मतलब अन्य पैसों के बारे में नहीं सोचना है, इकोनॉमी आपको जरूरत नहीं है, then it is okay. If you are having money, you can go for deep foundation, but again you have to think about economy also. So these are the different factors which affects the foundation. So I hope now this is the question asked in even MTech level also, what is the foundation, what is the purpose of the foundation, and what are the choice of the foundation? You go for deep foundation or shallow foundation. And in shallow also, again there are different types of foundation. आपको वहां पर भी आपको चॉइस होता, क्या स्प्रेड को जा रहे, ओके क्या कंबाइंड फुटिंग को जा रहे, ट्रेपेजोइडल को जा रहे, मैट को जा रहे, राफ्ट को जा रहे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. And even if you go for a deep foundation also, there also different criteria are there. Based on that one, you have to decide. Okay, so what is foundation, what is the purpose of the foundation, and what is the choice of the foundation? I think this much is very much clear to you. And once again, I remind you again and again, please, if you go in little bit detail also, then there is no harm in studying this subject, because the thing is, the maximum syllabus is whatever the competitive exams you write, no, same syllabus is there. Because MPSC you write or GATE, UPSC, anything write, bearing capacity, shallow foundation, deep foundation और soil exploration, ये 4 topic GT2 के 100% रहते, carrying maximum marks. So this is going to benefit you there also, unlike other your theory of elasticity or plasticity subjects. Okay, so now
the thing is clear. What is foundation? What is the purpose of the foundation? Or what is the choice of the foundation? What are the types of foundation? That is shallow foundation and deep foundation. So now, so in foundation, so different parts are there now. So now in foundation, different parts are there. So I told you what is foundation now. Foundation is that part of the structure which is in direct contact and transmits the load to the ground. This much you know. It is below the superstructure, and some construction you make it, or some techniques you apply there so that it can hold the superstructure. That is foundation. And then what is the footing? So generally we take footing and foundation are same, but the thing is footing is also foundation. Footing is part of the foundation. Footing is part of the foundation. So footing generally we construct with RCC or sometimes concrete, whatever the things we use. And what we do know in footing, we take the load first and you spread the load. That is generally the footings are of inverted T sections. The footings are of inverted T sections so that the load can be transferred to the maximum ground. देखिए लोड आपको एक ही जगह लाए ना तो वो स्ट्रेस हो जाता, लेकिन आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो स्ट्रेस कम हो जाता. सो दैट इज द पर्पस ऑफ फुटिंग. सो फुटिंग फाउंडेशन मतलब सारा चीज आ गया आपको जो भी सुपरस्ट्रक्चर के नीचे है, जबकि फुटिंग इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन. And what is the upper part of the soil in the foundation is there? That is the foundation soil. And next what I told you is next is ये सब terms आपको clear रहना बिल्कुल, so that you can understand the further things very much easily. So next is bearing capacity. बेरिंग कैपेसिटी क्या है? ये जो सॉइल का पावर है, जो सॉइल है आपके पास, जो भी रॉक है, जो ये पावर है, जो सपोर्ट करने का पावर है, दैट इज कॉल्ड बेरिंग कैपेसिटी. ओके, सपोज इफ योर रॉक इज देयर और सॉइल इज हार्ड, आपका बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा है. बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहने से जो भी आपके ऊपर लोड आ रहा, इजीली इट कैन विथस्टैंड. सो द होल थिंग डिपेंड्स ऑन bearing capacity. So bearing capacity is nothing but the supporting power of a soil or a rock is called bearing capacity. After knowing the bearing capacity, the two important things you should know is what is gross pressure intensity, what is net pressure intensity. You should know what is the gross pressure intensity, what is the net pressure intensity. Now please come here. Now you see this figure. बिल्डिंग आई हैव कंस्ट्रक्टेड ऑलरेडी, सुपरस्ट्रक्चर है और ये है इसका फुटिंग, और यहाँ पर ये सारा सॉइल है. Isn't it? सपोज करो, मान लो मैं कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करा यहाँ पर, इमेजिन करो उसको. यहाँ पर नाइदर बिल्डिंग इज देयर, सुपरस्ट्रक्चर इज देयर, नाइदर फाउंडेशन इज देयर. यहाँ पर ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर सारा मिट्टी है. यहाँ पर ऑफकोर्स आप खोदे भी नहीं, मतलब ग्राउंड के नीचे सिर्फ सारा मिट्टी रहेगा ही. That also dense, कभी-कभी रॉक रहे तो और रहेगा. तो यहाँ पर अगर से मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड निकालूंगा तो क्या, इमेजिन यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसका फिगर मैं नहीं बनाया आपको. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इज नथिंग देयर, यहाँ पर ओनली ग्राउंड लेवल इज देयर, और ग्राउंड लेवल के बाद यहाँ पर बहुत सारा मिट्टी है. तो यहाँ पर मिट्टी की वजह से यहाँ किसी भी पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे, वहां पर लोड आता. And this load is given by this unit weight into height, that is gamma into d और gamma into d. याद करो, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ ग्राउंड लेवल है, नीचे मिट्टी है. मैं कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करा ग्राउंड लेवल के नीचे, तो वहां पर क्या लोड आता? सुपरस्ट्रक्चर तो है नहीं, तो जो मिट्टी की वजह से आता वो लोड आता. इट इज गामा इंटू एच और गामा इंटू डी. सेम थिंग यू हैव स्टडीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स. देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में आप पानी लिए, एक बीकर में पानी लिए, पानी लेके पानी ठहरा हुआ है एट द हाइट ऑफ एच. अगर से किसी बेस के पॉइंट में मुझे टोटल प्रेशर निकालना है पानी की वजह से, तो इट इज गिवन बाय स्मॉल w into h, p is equal to wh. if you remember Pascal's law, all these things. So p is equal to w into h. W is specific weight of water there. So specific weight into h, that is the total pressure because of that height of water.
सो यहां पर भी सेम फॉर्मूला होता, बिकॉज ऑफ दिस टोटल हाइट ऑफ सॉइल बिफोर द कंस्ट्रक्शन, वॉट एवर इज देयर, दैट ओवरबर्डन प्रेशर इज कॉल्ड गामा एच. That is nothing but gamma h. Got it? So now I did the construction. तो उतना तो मालूम आपको गामा एच है. अब मैं कंस्ट्रक्शन कर दिया बिल्डिंग. कंस्ट्रक्शन मतलब पहले तो फाउंडेशन खोदा, फिर फुटिंग बांधा, यहाँ पर फुटिंग के ऊपर सुपरस्ट्रक्चर भी सब दीवारें बनाया, स्लैब लगाया, कॉलम सोलम सब हो गए, बिल्डिंग आपका रेडी हो गया. अब देखिए, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग आई विल डिफाइन व्हाट इज ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी. प्लीज ये सब बेसिक चीजें आप रट मत मारो, कुछ तो लिख के पास हो जाते हैं. क्या चीज है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट. Okay, so now gross pressure intensity. This is after the construction of the structure. So what is gross pressure intensity? It is noted by small q. The gross pressure intensity, Q, is the total pressure, at the base of the footing. The gross pressure intensity, Q, is the total pressure at the base of the footing due to the weight of the superstructure, self weight of the footing and weight of the earth fill if any. इसका मतलब क्या है? ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी मतलब मुझे यहां पर टोटल या फुटिंग के नीचे क्या क्या लोड्स आ रहे, वो सारे लोड्स का सम है. इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी. टोटल प्रेशर किसकी वजह से आ रहा? पहले तो सुपरस्ट्रक्चर है आपका, दीवारें हैं आपके, डोर्स है, विंडोज है, स्लैब्स है, बीम्स है, सब इसकी वजह से जो लोड आता. उसके नीचे फुटिंग कंस्ट्रक्ट करें आप. फुटिंग ऐसा ही कोई हल्का तो नहीं रहता, हाँ, कागज तो नहीं है, ये भी कंक्रीट से बना है, सो आप उसका भी सेल्फ वेट रहता. तो सेकंड थिंग इज दिस विल आल्सो पुट द प्रेशर ऑन द सॉइल. और इसके अलावा यहां पर फुटिंग से पहले सॉइल था, इस सॉइल के बिकॉज ऑफ सॉइल आल्सो गामा इनटू डी, वो भी ओवरबर्डन प्रेशर आता, वेट ऑफ द अर्थ फिल. तो ये तीनों की वजह से बेस ऑफ द फुटिंग में जो टोटल प्रेशर आता, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी. दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर intensity. I hope now the thing what is gross pressure intensity, small q, is clear to you. Gross pressure intensity means total pressure at the base of the footing because of the superstructure. Second, self weight of the footing. Second, weight of the earth fill. Weight of the earth fill. इन तीनों को हम लेंगे तो it is called gross pressure intensity. And remember, gross pressure intensity is denoted by Q. Gross pressure intensity is denoted by Q. The gross pressure intensity, Q, is the total pressure at the base of the footing due to the weight of the superstructure, self weight of the footing and weight of the earth fill if any. And the weight of the earth fill if any. तो इन तीनों की वजह से बेस ऑफ द फुटिंग में जो प्रेशर आ रहा, टोटल प्रेशर, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी एंड इट इज स्मॉल q. Then what is the net pressure intensity? Net pressure intensity is denoted by Qn. Net pressure intensity is denoted by Qn. Then what is the net pressure intensity? Net pressure intensity, it is defined as the excess pressure or the difference in intensities of the gross pressure after the construction of the structure and the original overburden pressure. तो मैं आपको क्या बोला था, देखिए ये सब डेफिनेशन पहले से मैं आपको बताता हूं. नेट प्रेशर इंटेंसिटी क्या है, मैं आपको क्या इमेजिन करो बोला कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से क्या था, यहां पर गामा डी था, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या क्या हो गया, सुपरस्ट्रक्चर आया, फुटिंग आया और गामा डी भी आया. तो अगर से हम गामा डी को निकालेंगे, अगर से गामा डी को हम माइनस करेंगे तो जो प्रेशर आता, इट इज कॉल्ड नेट प्रेशर इंटेंसिटी. तो टोटल ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी में से, मतलब नेट प्रेशर इंटेंसिटी में अर्थ फिल को कंसीडर नहीं करते. व्हाट वी कंसीडर इज सुपरस्ट्रक्चर एंड वेट ऑफ फुटिंग ओनली. तो जो ये डिफरेंस है, ओरिजिनली गामा इंटू डी था,
जब ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी हम ले रहे तो सुपरस्ट्रक्चर के वेट को भी ले रहे, फुटिंग के वेट को भी ले रहे, प्लस गामा डी भी ले रहे बिकॉज ऑफ अर्थ प्रेशर, whatever the weight of the earth is there. But when we consider net pressure intensity में total gross pressure intensity में से गामा डी को माइनस करो, it is called net pressure intensity. So net pressure intensity is denoted by Qn. It is defined as the excess pressure or the difference in intensities of the gross pressure after the construction of the structure and the original overburden pressure. Thus, if D is the depth of the footing, then Qn is equal to Q minus sigma bar or Q minus gamma D. Q minus gamma D. Got it? So this is the gross pressure intensity Q and this is the net pressure intensity Qn. अब मुझे ये बोलो, what is foundation? Clear है आपको? फाउंडेशन क्या रहता है जनरली? मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस नो, फाउंडेशन हमारे को आंखों को दिखता ही नहीं, तो इट इज नेग्लेक्टेड टोटली. हम लोग ऑलवेज व्हेन वी सी द बिल्डिंग वी थिंक अबाउट स्लैब, वी थिंक अबाउट वॉल्स, वी थिंक अबाउट डोर्स, विंडोज, वी never think about foundation. Foundation is the hidden part, but it is very important thing. Okay, so what is foundation? You should know. What is the purpose of foundation? You should know. How you are going to choice particular type of foundation, that you should know, and you should know what are types of foundation. तो ये तो बेसिक चीज है. After knowing all these things, you should know what is the difference between foundation and footing. Then what is the bearing capacity, and next thing is what is gross pressure intensity, what is net pressure intensity. Gross pressure intensity is Q, whereas net pressure intensity is Qn. I hope these much things are very much clear to you, okay. Now assuming that all these things you know it very well, of course you have studied it, but just I have to remind all these things. Now next is ultimate bearing capacity. This is my most important term. So the only bearing capacity means just we tell that it is the supporting power of soil, but along with bearing capacity some suffixes are there. Net ultimate bearing capacity, safe bearing capacity, ultimate bearing capacity, allowable bearing capacity. So what are these different things, that also you should know. Only bearing capacity means it is supporting power of soil. Supporting power of soil or a rock is called bearing capacity. Okay, so now then what is ultimate bearing capacity? So remember, ultimate bearing capacity is denoted by QF with suffix F, small q, F. Small q means gross pressure intensity, Qn is net pressure intensity, then ultimate bearing capacity kya hai? Denoted by QF. Then what is the ultimate bearing capacity? It is the maximum pressure that the foundation soil can withstand without undergoing shear failure. तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम प्रेशर, जो भी मैक्सिमम प्रेशर इन द सेंस हियर ग्रॉस प्रेशर, रिमेंबर दिस प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर इन द सेंस इट विल टेक एवरीथिंग, maximum pressure means it will take everything, everything in the sense weight of the superstructure, weight of the footing and then weight of earth fill. ये तीनों को मिला के अगर से it is the maximum pressure that a foundation soil can withstand, मतलब ये तीनों का maximum pressure जो भी रहेगा, अगर से soil उसको withstand कर रहा, उतना pressure ले रहा, it is the maximum pressure that a foundation soil can withstand without undergoing shear failure. मतलब इतना pressure गिरने के बाद भी वहां पर shear failure नहीं हो रहा, तो उसको बोलते ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity. And sometimes, in most of the times, if we use the term bearing capacity also without adding any suffix or without taking into consideration any suffix, means that also you should understood that it is nothing but ultimate bearing capacity. What is meant by this one means, अगर से किसी bearing capacity के आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो भी आप उसको क्या समझो, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी समझो. तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो है जो मैक्सिमम प्रेशर
जो मैक्सिमम प्रेशर, इट इज द मैक्सिमम प्रेशर मींस इंक्लूडिंग ऑल द थ्री थिंग्स जो सॉइल लेता विदाउट गोइंग और विदाउट फेलिंग इन शियर, इट इज कॉल्ड अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. Ultimate bearing capacity, and it is denoted by QF. It is denoted by QEF. I hope now this thing is very much clear to you what is meant by ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity. Now next, what is net ultimate bearing capacity? It is denoted by QNF. So it is ultimate bearing capacity denoted by QF. Then next is what is QNF? That is net ultimate bearing capacity. Net ultimate bearing capacity. It is the minimum net pressure intensity causing shear failure of the soil. Net minimum term, it has been used because here net pressure is taken into consideration where earth fill is not considered. It has been here the only two weights considered are, one is the weight of the superstructure, second is weight of footing. Ultimate bearing capacity means everything is considered here. Net ultimate bearing capacity means earth pressure, earth fill is neglected. That is why minimum term is used. It is the minimum net pressure intensity causing shear failure of soil. तो मिनिमम तभी बनता है जब हम अर्थ प्रेशर को, अर्थ फिल को टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और मैक्सिमम उस वक्त बनता है जब हम अर्थ फिल को ऐड कर रहे हैं. समझ रहे इस बात को आप? सो इट इज द मिनिमम नेट प्रेशर इंटेंसिटी causing shear failure of soil. The ultimate bearing capacity QF and the net ultimate bearing capacity are evidently connected by the following relation. तो आपको मैं इतना ही बोल सकता हूं कि QF क्या है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है. ये मैक्सिमम लोड लेता, द मैक्सिमम प्रेशर जो भी आता including earth fill is called ultimate bearing capacity, whereas अर्थ फिल को नेग्लेक्ट करके सिर्फ सुपरस्ट्रक्चर और फुटिंग को कंसीडर करके जो टोटल प्रेशर आता मिनिमम, दैट इज कॉल्ड नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी. And how these are related? Just like gross pressure intensity and net pressure intensity. Gross pressure intensity और net pressure intensity कैसा related थे? Qn is equal to Q minus sigma bar. So same thing here. यहाँ पर भी QNF is equal to QF minus sigma bar. Means जैसा net pressure intensity is equal to gross pressure intensity minus sigma bar, and sigma bar is gamma d अर्थ फिल का. सो Qn is equal to Q minus gamma d है. So same thing, net ultimate bearing capacity, net ultimate bearing capacity is also equal to net ultimate bearing capacity is also equal to ultimate bearing capacity minus sigma bar or gamma d. So while solving the problems, you have to be a little careful whether he is asking net bearing capacity, net ultimate bearing capacity, or ultimate bearing capacity. If nothing is mentioned, only bearing capacity is mentioned, means you have to take ultimate bearing capacity only. Ultimate bearing capacity only, where QNF is equal to QF minus sigma bar, where sigma bar is the effective surcharge at the base level of the foundation. Where sigma bar is the effective surcharge at the base level of the foundation. I hope now all these four terms are very much totally clear to you. First is what is gross pressure intensity. Second is what is net pressure intensity. Third, what is ultimate bearing capacity. And fourth is what is net ultimate bearing capacity. What is net bearing ultimate capacity. Got the thing? Now, नेक्स्ट इज डेफिनेशन आपको जरा क्लियर होंगे, फिर हम लोग फेलियर ऑफ सॉइल्स को जाएंगे. अलग अलग टाइप के सॉइल फेलियर होते हैं, कभी जनरल शेयर फेलियर में, लोकल शेयर फेलियर में, फिर उसके बाद पंच्ड शेयर फेलियर क्या है, उसके बाद तेर्स्गीज के इक्वेशन को एक बार डिटेल में अच्छी तरह हम डिराइव करेंगे. तो यहाँ ज्यादा क्या है, आपको अंडर ग्रेजुएट से लेवल से मतलब आपको स्कैम्पटन्स एनालिसिस डिटेल में है, मेहरफ्स एनालिसिस डिटेल में है, जबकि आप बी लेवल पे सिर्फ तेर्स्गीज पढ़ते थे और थोड़ा कम प्रॉब्लम था, यहाँ पर थोड़ा कुछ ज्यादा है. ओके, all these things only more. So next is now net safe bearing capacity. So ultimate bearing capacity is there,
net ultimate bearing capacity is there. Now next is net safe bearing capacity. So what is net safe bearing capacity? The net safe bearing capacity is the net ultimate bearing capacity divided by a factor of safety F. The net safe bearing capacity, याद रखो, net safe bearing capacity is the, जो net ultimate आपको QNF आ रहा, QNF को आप factor of safety से denote करो, it is net safe bearing capacity and it is denoted by QNS. QNS. So QNS is equal to QNF divided by EF. QNF divided by F, where F is factor of safety. So this is the net safe bearing capacity. So what is factor of safety? This I will explain. अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपको ये, this is the common term you will find not only here, in every designs. So always you take some factor of safety, 2, sometimes 3, sometimes 4, sometimes 6, also in pile foundation, all these things. So what is this factor of safety, why we consider it, that also I will tell now. So before that you should know what is net safe bearing capacity. ये बिल्कुल आपको clear होना चाहिए देखो. So then you can understand the chapter very well. Otherwise you will be confused. मैं आपको confuse रहती. तो ultimate bearing capacity मालूम हुआ आपको, QF. मतलब यहाँ पर सारा लोड आता, मैक्सिमम प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर पूरा ले रहे हैं मैक्सिमम. और नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी QNF. लेकिन यहाँ पर अर्थ फील कब तक, तो हियर वी don't consider that one. Net safe bearing ultimate bearing capacity. So अब नेट में और अल्टीमेट में रिलेशन क्या है, QNF is equal to QF minus गामा डी और सिग्मा बार, गामा डी और सिग्मा बार. और उसके बाद नाउ नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी. नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी मतलब नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को आप डिवाइड करो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, सो यू विल गेट it as net safe bearing capacity. Net safe bearing capacity. So the things are very much clear to you यहाँ तक. तो अब इसके बाद आप एक 2-3-4 मिनट का रेस्ट ले लो, ये अपने आप बंद हो जाता. So again you can rejoin after 3-4 minutes. मालूम हुआ? तो एक बार और रिकॉल कर लो, what is foundation, what is the purpose of foundation, how you are going to choose a particular type of foundation, what are types of foundation, उसके बाद what is footing, what is foundation, then what is gross pressure intensity, what is bearing capacity, उसके बाद what is gross pressure intensity, what is net pressure intensity, what is the relation between them, then what is ultimate bearing capacity, उसके बाद net ultimate bearing capacity, QNF, और QNF और QF में क्या रिलेशन है, उसके बाद मैं आपको बताया what is net safe bearing capacity. So net safe bearing capacity is nothing but this is net ultimate bearing capacity divided by factor of safety. So you have a break of 5 minutes at the most, maximum 3 minutes में आता हूं मैं वापस थोड़ा पानी पीकर. So उसके बाद we will continue what is net safe bearing capacity, what is safe bearing capacity, alloyed bearing pressure क्या है, उसके बाद modes of shear